various contents I had said, what contents we are going to cover in this. First is your auditing in computerized accounting software, then statutory audit, then voucher verification, then verification of related party transactions. Those we will discuss. Then computerized जो आपका CAT है उसके according CAT is your concept of computer assisted audit techniques. So what are those, what are why we are using those CAT techniques, and what are the guide related to it, what documents are required while you are doing computerized accounting audit, computer related, or you can say computer assisted audit techniques, so how you can do it, and then audit test in CAT, how you can do it. So these things we are going to discuss in your unit 5th. These are the contents of your unit 5th. Okay, so I'm going to share my screen. Just a second. More. No. Share screen. Okay. So here, unit 5th. That is. That is your unit 5th. Okay. So why it is not visible to. Okay, so okay, so this is your unit 5th, auditing. So what is auditing in computerized accounting system? As already in unit 5th, I already explained about what is computerized accounting system. Again, I'm letting you know what it is. It is the process of recording, analyzing, and summarizing accounting transactions with the help of computer. Okay, so with the help of computer, what you are doing all the accounting process that includes recording, analyzing, summarizing the accounting transactions. Okay, so in order to produce those accounting records and reports on time, okay, and in a very effective and efficient manner, computer plays a very important role. So computerized accounting system, basically what it does, it takes the inputs in the form of accounting transactions that are processed with the help of accounting software like Tally. I have discussed regarding your accounting software Tally. Then in the from Tally in the form of journals, ledger, trial balance, then balance sheet and P&L account, profit and loss account. So for a computerized accounting system, what you had to do, various transactions you had to enter as an input, as this is the essential data items which is further processed into accounting software to produce different information in the form of accounting reports. जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करते हो और जो हमारा सॉफ्टवेयर में आप जो एंटर करोगे ट्रांजैक्शंस दैट आर थ्रू वाउचर्स. ओके, तो जो भी आप वाउचर्स की एंट्री करोगे, तो in that vouchers afterwards you had to take the report. Okay, and report in the form of what? Journal, ledger, then profit and loss account and balance sheet, etc. तो यहाँ पे आप लेजर का रिपोर्ट ले सकते हो जो आपके अकाउंटिंग वाउचर्स आपने ऐड किए हैं. देन इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस profit and loss condition of that company, तो उसके लिए, and along with that if you want to know about what is the assets and what are the liabilities condition of that company, whatever assets it has, through balance sheet it can know. Okay, so जो reports हैं, from those reports of journal, ledger, profit and loss account and balance sheet you can get through software. So in computerized accounting basically is what? A general transaction is having basically 4 data elements.
First is your account, then accounting code, then date of transaction and amount. So information may be जो आप enter करोगे may be treated as input at one level, and then it is further processed after taking into account various requirements of decision maker, and then it becomes at next level like information. In the next level it is like a information, so information in the form of reports. Okay, now if I say about what are the components of computerized accounting system, computerized accounting system basically it components की बात करें तो हम step by step we will discuss. First of all, जो traditional we will like to know, I will discuss about what is the manual system of accounting, or you can say manually or traditionally हम कैसे करते थे. जो popular method है हमारा of doing accounting is your manual system. Where what you do the recording of transactions of a business firm manually. Financial statements, profit and loss account and balance sheet are the final results of the counting process, and those are prepared by following the accounting principles, generally accepted accounting principles according to GAAP. So accounting process basically is what art of identifying, analyzing, interpreting and communicating that information. So while doing this process, it involves various steps. What are they? First, you had to business transaction, you had to record the business transaction after analyzing. So after analyzing, what you had to do, first step is your to record those business transactions. And where you will record those business transactions? In the journal. Then you had to post those journal entries into your ledger accounts. Then after posting those entries, what you had to do, you had to match all the credit and debit balances, or you can say all, you had to match the you had to take the balances of all your ledger accounts in the trial balance, and then you had to match the balances. And if they are matched, then the entries or transactions that you are recorded, that are correctly recorded. And if those are not correctly recorded, then what it means, there is some error made by you, whether it is a clerical error or by mistake. So many errors are there, you had studied. So because of those errors, that balances are not equate or not balanced. So that's why because of those, you can go again for reviewing of your accounts and make changes if necessary, and you can do the adjustments in the ledger. Then after that, you had to prepare the balance sheet and profit and loss account. Then financial statements are prepared with the help of finally adjusted ledger and your balancing account. So above so जो ये सारे process I had told you, so these whole accounting process can be done with the help of computers. जबकि हम manually जब करते थे, it's a very time taking process. So while doing these all process of accounting, so if there is a need for audit also. So what is the importance of audit process in this whole process while doing accounting process? So okay, so audit process in computerized accounting is what that we are going to discuss. So overall scope and importance of audit do not change when it is done in computerized accounting system. If you say you are doing your accounting process in your computer, through your computer, so it doesn't means कि जो scope है audit का या उसकी importance है, it will change. No, it will not change, and also it will not affect the main objectives of accounting. That is main, what is the main objective? To reflect the true and fair view of accounting records. Okay, so even the जो role है auditor का, even the role of auditor is becoming very crucial in the computerized accounting system. Why? Because it may influence by the deep environment of organization. It also becomes difficult to trace the mistakes and frauds in the accounts in the electronic form. And it may be possible that computerized accounting system, it may lead to number of frauds and errors. So the auditor has to follow various steps so that these errors and frauds can be minimized, reduced, or even ye ho hi na. Okay, it will not occur. Okay, so for that purpose, what an auditor has to do, first of all, he or she has to do a preliminary survey. Then second step is your reviewing and assessing internal control. Then compliance testing, substantive testing. Then audit reporting. What these steps means, one by one we will discuss. First is your preliminary survey.
Preliminary survey, what it means, this is the primary, or you can say the first step to make a plan how to proceed for the auditing for accounting records. So first of all, what first step you had to take कि कैसे आपको proceed करना है, कैसे आपको शुरुआत करनी है auditing process की in relation to your accounting records. So first of all, what auditor has to do, first of all he has to take the primary step. First step, एक पूरा प्लान करना है, एक पायलट टेस्टिंग करना है कि यू कैन से एक प्लान या एक रफली फॉर्मेट बनाना है कि किस किस तरीके से वो ये प्रोसेस करेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज टू व्हाट, टू मेक अ प्लान हाउ टू प्रोसीड, make a plan how to proceed for auditing for accounting records. Okay, so first of all for this purpose जो ये पहला step, इसके लिए क्या करेगा auditor, what he will do, he will collect all relevant information related to that is important to audit structure of computerized accounting software, which includes about knowing the functioning of that computer accounting software, use of computer software programming, and application based accounting system. So these things are needed to be known by the auditor. Then only he can gather the information related to it, what is relevant according to it for audit process, and then he has to take over the further process or take over the next step. Okay, then after having this information, after collecting ki regarding इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडिट स्ट्रक्चर जो नीडेड है कि फंक्शनिंग कैसे होगा कंप्यूटर का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, उसका यूज कैसे कर रहे हैं विच सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू, एंड उसका एप्लीकेशन बेस्ड कैसे है. तो ये सारा जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यूइंग एंड असेसिंग internal controls. Reviewing and assessing means next step after preliminary surveys to review and assess internal controls. And basically review karna or assess karna internal control is divided into two types. First is your general control and second is your application control. General control, if I say what it includes day-to-day functioning of organization, मैनेजमेंट इन कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट की डे टू डे डेली जो उनका फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे है, उसमें कैसे जनरल कंट्रोल है. और ये कंट्रोल जो है इट मस्ट बी टेस्टेड बिफोर प्रोसीडिंग्स टू एप्लीकेशन कंट्रोल. Otherwise क्या होगा, whole system would be defective and all efforts of auditor go in waste. So first of all, what auditor has to do, first of all he has to know about the computer accounting software, important information related to it, related to that software, which includes knowing and functioning of that software, then use of software programming and its application. After that, what he has to do, he has to go for the प्रिलिमिनरी सर्वे. प्रिलिमिनरी मीन स्टार्टिंग, एक स्टार्टिंग वाला सर्वे रिव्यू करने का, कि देखने का और एसेस करने का जो इंटरनल कंट्रोल है वो किस तरीके से है. और वो दो जो इंटरनल कंट्रोल है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहला है जनरल कंट्रोल. जनरल कंट्रोल में जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू मैनेजमेंट इन कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट, वो रिव्यू करेंगे. और ये कंट्रोल जो रिव्यू करेंगे इसको क्या करेंगे, टेस्ट भी करेंगे बिफोर proceed to this application control. Otherwise क्या होगा, if they had not tested or they had not done the pilot testing, then what, sorry not pilot testing, just testing. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टेस्ट नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो होल सिस्टम वुड बी डिफेक्टिव एंड जो भी एफर्ट्स ऑडिटर ने लगाया दैट विल गो वेस्ट. ओके, ऑडिटर गो इन वेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज योर application controls. When this step has been completed, now next step auditor what he will do, he will application controls are basically what, a specific control based on transactions and data that are entered into computer system and they are related to specific application and its objectives. मीन्स कि जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स पे बेस्ड है, जो कि डेटा आप एंटर करोगे कंप्यूटर सिस्टम में और वो रिलेटेड है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. तो सेकंड इज रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक कंट्रोल. तो एक एफिशिएंट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि जो भी प्रॉपर चेक है, दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर चेक
ऑन वेरियस थिंग्स लाइक अगर वो इनपुट कंट्रोल कर रहे हैं या प्रोसेसिंग में है या आउटपुट, तो तीनों प्रोसेस में जब आप डेटा इनपुट करते हो, प्रोसेस करते हो और आउटपुट लेते हो, तो तीनों में इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल में देखेगा कि देयर इज अ प्रॉपर चेक. सो इफ जो हम सीएस की बात करें, अगर एक एफिशिएंट सीएस की बात करें, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सीएस क्या है? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज व्हाट? जो प्रॉपर चेक करे अपना इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंट्रोल को. सो you can say that efficient computerized accounting system makes sure whether there is a proper check in input control, processing control or output control. So they should provide a reasonable assurance that the initiating, recording, processing and reporting of data are properly परफॉर्म. तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एप्लीकेशन कंट्रोल में एक स्पेसिफिक कंट्रोल बेस्ड जो है application control is basically what? एक specific control based है on transactions and data are entered into computer system related to specific application and its objective. और जो effective computerized accounting system है, it will make sure whether the data is being properly input किया है, उस data का अच्छे से जो है उसमें कोई error नहीं है. Then while processing there is also control and output control, जो output आएगा. So they should provide a reasonable assurance while initiating that, recording that, then processing and reporting of data in a properly performed manner. Okay. Then after that step, what next step auditor has to do? Compliance testing. Compliance testing is what? It is basically a predetermination test or a dummy test, you can say, or a pilot testing, you can say, in which testing is performed with an objective to check whether the control is there or not as they had planned. Okay. तो compliance testing is what? कि जो भी उन्होंने प्लान किया है, ऑडिट जो कंपनी है उसने जैसा प्लान किया था, उस प्लान के हिसाब से आपका जो है चीजें हुई भी हैं या नहीं. जैसे कुछ उन्होंने नई टेक्निक्स जो है ऑप्ट की हो या फिर प्रिंसिपल्स फॉलो किए हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं या नहीं. ओके. तो इसके लिए वो क्या करेंगे ऑडिटर? एक कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, जिसमें एक यू कैन से दैट टेस्ट एज अ प्री डिटरमाइंड टेस्ट और अ डमी टेस्ट, जहाँ पे वो टेस्टिंग करते हैं कि जो with the objective to check whether that control is there or not as per planning. Okay. So in this process जो actual result है उसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे प्री डिटरमाइंड रिजल्ट से, कि जब आप चेक करते हो कि जो एक्चुअली आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं या नहीं, तो आप क्या देखते हो? जो एक्चुअल आपका रिजल्ट निकला है उसको कंपेयर करते हो जो आपने प्लान किया. तो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट को आप क्या करोगे? जो आपका प्री डिटरमाइंड रिजल्ट था कि पहले आपने ये सोचा कि आपका रिजल्ट इतना निकलेगा, तो उससे आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे. तो यहाँ पे कंप्लायंस टेस्टिंग इज दैट. नाउ नेक्स्ट इज योर सब्सटैंटिव टेस्टिंग. Substantive testing is what? This testing is done by the auditor to confirm about the authenticity of the evidence of transaction. इस स्टेप में सब्सटेंशिव टेस्टिंग इंक्लूड्स व्हाट? कि एक टेस्टिंग करता है ऑडिटर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं ने, तो उनको कंफर्म करना, उनकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना, उनके एविडेंसेस जो सपोर्ट में लगाए हैं कि वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, फेक तो नहीं है, गलत तो नहीं है, फेक तो नहीं शो किए हैं. तो जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि वो सही है कि नहीं, along with proof of evidence. Okay. So under the purview of auditor's duty to evaluate and analyze the accounting balancing figures of the accounts and risk of financial statement. तो ये चीज किसके अंडर आएगी? ये ऑडिटर की ड्यूटी है. ऑडिटर के अंदर आएगी कि वो ये इवेलुएट करे, चेक करे कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो along with evidences कि वो फेक नहीं है, those are real one. And second, जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं अकाउंट्स के, along with that उनको भी चेक करे, and जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स हैं. ओके. So auditor must ensure itself about the authenticity of the evidences for making an opinion about financial statement, कि वो अपना opinion दे पाए कि जो
एविडेंसेस कंपनी ने शो किए हैं रिगार्डिंग एवरी आइटम और एवरी ट्रांजैक्शन दैट दे हैड रिकॉर्डेड, तो वो जो ऑथेंटिसिटी है एविडेंसेस की वो सही है। ओके, अगर उनकी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड जो एविडेंसेस लगाए हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ऑडिटर को लगता है कि इट इज नॉट वेरी सपोर्टिव और वो स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, तो वो ऑडिटर उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अपना ओपिनियन नहीं देगा, ही और शी मस्ट नॉट गिव एनी ओपिनियन। ओके, then last is your audit reporting. Audit report is what? It is the final result. जब ये सारे steps कर लेगा auditor, then last में वो क्या करेगा, एक report बनाएगा on the basis of these steps. Okay, तो ये क्या होगा, last आपका final step होगा जिसमें final result जो है auditing process का वो क्या है, audit report. Audit report बनाएगा. So it includes what? Detailed information प्लस फाइंडिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ ऑडिटर, कि जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसने ऑडिटर ने जो है देखी है और जो फाइंड आउट किया, और उनके बेसिस पे अपना ओपिनियन जो है ऑडिटर ने बताया रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन दैट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वट एवर सिस्टम कंपनी इज फॉलोइंग थ्रू विच सॉफ्टवेयर, तो उसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, अपने ओपिनियंस जो है बताना। सो व्हेन वी से जब ऑडिटिंग इज डन in CAS, the auditor must possess, he or she must have a proper required knowledge of computer plus hardware plus software about the whole system. Then only he can find out the leakages. Otherwise, if he is not well equipped with the accounting software, the knowledge of accounting software or hardware, then he can't do the auditing process in a right way. Okay, so auditor should be well trained and should be aware about that system that he is going to audit and its process techniques to be implemented in the auditing of accounts. So it is very clear, or you can say glass clear, that जो main purpose है, that main purpose and importance of audit doesn't change whether it is done manually or through computerized accounting system or through software. Okay, so यहाँ पे these are the steps if you say about accounting audit process in computerized accounting system. So these steps are in short, you can again review this. Ki first of all, what auditor has to do, he or she has to conduct a preliminary survey. Then after it, he or she has to review and assess the internal control checks, which is divided into two groups. Okay, that is general and application control. Then compliance testing they had to do, then substantive testing, and at last is your audit reporting, which is your final step. So this is the process. Now next is your statutory audit. Statutory audit is what? It is an audit which is made compulsorily by some statutory, like Reserve Bank of India, RBI, company law, or income tax act. So some statute like RBI hai ya company law ya income tax hai, so they had made, according to these laws, they had made accounting process, they had made statutory audit to be a mandatory one for अकाउंटिंग प्रोसेस। जो भी कंपनी अकाउंटिंग प्रोसेस करती है तो उनके लिए मैंडेटरी है टू डू स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बैंक्स आर कंपल्सरी, कि हर बैंक का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इट शुड बी डन बाय एन ऑडिटर। सो ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ ऑडिट, qualifications possessed by an auditor, or rights, duties and liabilities of an auditor, all are mentioned in that statute itself. Okay, so when we talk about in reference to computerized accounting system, uh, statutory audit is same as done in manual system. For example, audit of insurance company is done under the Insurance Act 1938, means according to Insurance Act 1938, this act has made mandatory टू डू ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका ऑडिट होना चाहिए, और किस एक्ट के अकॉर्डिंग, इंश्योरेंस एक्ट 1938। लाइकवाइज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 has made it mandatory to do the audit of banking companies. Okay, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आते हैं, अंडर आते हैं। Then audit of limited companies is regulated under the Companies Act 2013. Okay, then
audit of electricity companies is governed under the Electricity Supply Act 1948. So these are some of the examples that where you can see the statutory audit is mandatory or compulsory, and who is going to regulate that, or which act is governing that statutory audit. Okay, so if you say that it is compulsory in or you can say mandatory in only in manual, no, it is same for manual and computerized auditing. Okay, so statutory audit is basically what all is a audit which is made compulsory by some statute like RBI, company law, income tax act. Okay, whether means any act, कोई भी act के अंदर ये mandatory हो सकती है. Okay, so all aspects जितने भी हैं, qualification, right, duties, liabilities, वो सब उन acts में mentioned होंगे कि जो भी auditor audit करेगा तो उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वेदर ही और शी इज एलिजिबल टू डू ऑडिट और नॉट, और उसके लाइबिलिटीज क्या हैं. ओके, सो सेम है इफ देयर इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम अकाउंटिंग का ऑडिट है या फिर मैनुअली. ओके, नाउ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज गिवन अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट द ऑडिट प्रोसेस and also make it ensure that its audit report comply with all the requirements mentioned in the stretch. तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक टाइम लिमिट, ऑडिटर को क्या है, एक टाइम लिमिट दिया जाता है. ही और शी हैज गिवन अ टाइम लिमिट. विद इन दैट टाइम लिमिट दे हैड टू complete their whole audit process and had to make ensure that कि जो audit report है, that audit report is according to the requirements जो कि mentioned है statute में. Okay, now next is your verification of vouchers. Okay, just a second. Okay. Now, verification of vouchers, what it says, according to Dr. Paula, vouching is the backbone or essential step in auditing process. And as we know that auditing is based on what evidences in the form of vouchers. So vouching is like soul of an auditing because opinion of auditor for financial statement is based on those vouchers. तो यहाँ पे जो डॉक्टर पौला है, what he has said, ये सेट कि कोई भी अकाउंटिंग का बैकबोन जो है वो क्या होता है, वाउचर्स होते हैं. व्हाई वाउचर्स आर द एविडेंसेस, कि ये दोज आर द एविडेंसेस इन, और यू कैन से द evidence related to that transaction that is being recorded in that, whether it is a manual system or traditional or through computer software. Okay, so अगर आप कोई transaction record कर रहे हो तो vouching is the backbone of it. Why? क्योंकि it is the you can say it is the evidence that is showing in the form of vouchers. So vouching is like a soul of auditing, कि अगर vouchers नहीं है तो evidence नहीं है तो auditing can't be done. So auditing is basically based on the vouchers along with proof of evidences. Okay, क्योंकि जो auditor का opinion है that is based on vouchers only. If there are no vouchers, then there is no need for auditor and there is no need for doing the auditing. So vouching is like a soul of auditing. And because opinion of auditor for financial जो statements हैं, उन उनसे related जो opinion है auditor का, that is based through vouchers only. कि auditor will see the vouchers and on that basis
he will make the decision ki whether along with seeing the proof of evidence whether those vouchers are real or fake, and on that basis he will take the decision regarding financial statements whatever the company has shown. Okay, so auditing is a process of obtaining those and screening those evidences related to financial transactions. Okay, पहले तो वो financial transactions auditing क्या है, एक process है of obtaining and screening those evidences, कि पहले वो ले फाइंड आउट करे उन एविडेंसेस को, उनको स्क्रीन करे, देखे कि सही है या नहीं रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड देन मेक ओपिनियन अबाउट इट्स truthfulness and fairness, ki whether they are correct or they are the fake one or they are manipulated of financial results predicted in financial statements. So however, if I say audit process, basically audit process ki jo success hai, it is based on how carefully and diligently वाउचर्स आर बीइंग एनालाइज, कि जो वाउचर्स हैं कितने केयरफुली और डिलीजेंटली वो वाउचर्स एनालाइज हुए हैं और रिकॉर्ड हुए हैं ऑडिट प्रोसेस में. ओके, सो वाउचर्स आर लाइक अ मैजिक स्टिक, if carefully used then can do miracle, otherwise what will happen, it will do a disaster. If they are fake and that, they are not supported by an evidence, then disaster. Why? Because it will show your fake results regarding your financial statements. So it is very important to use vouchers very carefully, to check those vouchers very carefully, whether they are the real one or the fake one, whether those are not manipulated, and whatever the evidences are there regarding that voucher, those are in support, those are the very those evidences are very true. Okay, and very strong while supporting that transaction. Okay, so vouching is what it is. You, on the basis of this, you can say that it is the baseline on which auditor can form his opinion, कि auditor अपना opinion दे सकता है और वो opinion through vouchers दे सकता है. तो you can say that base of auditor's opinion is based on what? Vouching. So vouching is the baseline on which auditor can form his opinion related to what? The financial transactions are recorded in accordance to the requirement, की जो requirement है उस act की, जिस भी act से वो governed है, तो वो जो एक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है. ओके, सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट. देन सेकंड इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू बिजनेस, कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं दोज आर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली. Then third is the financial transactions are actually taken place in reality, not a fake one. That I had told you कि जो financial transactions हैं that are not fake one, कि ऐसा नहीं है कि गलत transactions fake show कर दिए, even वो in reality है ही नहीं, वो transactions create ही नहीं हुए. Okay, then that evidence provided has a real validity, कि जो भी evidence आप provide कर रहे हो related to any transaction whatever business has recorded, तो उसका evidence जो है उसकी वैलिडिटी है. ऐसा नहीं है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है कि कोई वैलिडिटी नहीं है, ही नहीं है. ओके, so this is the about verification of vouchers. Then verification of vouchers I already had explained. Again I am saying what it is. It is a process in which auditor not only rely on financial transactions जो record हुए हैं, recorded financial transactions, but goes beyond it and check the authenticity of evidences in support of those फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की. जो वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर का मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर क्या करता है, वो सिर्फ जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड की हैं सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग को नहीं देखेगा, उस रिकॉर्डिंग के साथ उन ट्रांजेक्शन्स के सपोर्ट में क्या एविडेंसेस लगाए हैं कंपनी ने, उनको भी चेक करेगा कि वेदर दोज आर रियली रियल वन और फेक वन. उसके बियॉन्ड जाके, ठीक है, कि सिर्फ ट्रांजेक्शन चेक कर लिए, ही हैज टू गो बियॉन्ड दैट, कि वो ट्रांजेक्शन्स के सपोर्ट में जो एविडेंसेस लगे हैं वो जो एविडेंसेस हैं दैट आर द रियल वन. ओके, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि वो फेक तो नहीं है. ओके, सो ही कांट मेक अ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. He has to go behind it and check the accuracy and truthfulness, genuineness of that transactions related to business. So you can say that auditing is what? It is the foundation of that
accounting process. Okay, so it might happen that कि कुछ false entries जो है record कर दिए जाएं या fake payment show कर दिए जाएं business में, तो which so it is you can say कि there may be there might happen the false entries have been recorded, or you can say the fake payments are recorded which are not related to business, or which might not happen in the accounting period जिसमें वो record किए हैं कि उस accounting period में वो transactions हुए ही नहीं है. Okay, but अगर वो transactions show हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो का कंपनी का प्रॉफिट है वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके कंपनी का प्रॉफिट कम शो करना. ओके, विद अ पर्पस टू शो अ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो दैट टाइप ऑफ फॉल्स एंट्रीज can only be traced with the help of auditing by verification of vouchers or supporting documents. ओके, सो अगर ऐसी कोई फॉल्स एंट्री है जिससे कि बिजनेस अपना प्रॉफिट कम शो करना चाह रहा है, फेक एंट्रीज उसने बनाई है पेमेंट की, या फिर जो अकाउंटिंग पीरियड है जिसका उन्होंने ऑडिट करा रहे हैं, जिसकी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो है पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज डाल दी, तो वो पहले वाली हुई थी लेकिन अभी इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है. ओके, तो वो एक फेक एंट्री हुई, तो उसको वेरीफाई करना बेस्ड ऑन, और उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको देखना कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट ऑफ ऑडिटर. तो वो जो ट्रांजैक्शंस है, दीज आर कॉल्ड वाउचर्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. तो जो भी वाउचर्स लगाए हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो ऑडिटर का वर्क है कि उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करे, उनको वेरीफाई करे. और अगर ऑडिटर अपना ये ड्यूटी बहुत ही अच्छे से करता है, इफ ऑडिटर परफॉर्म हिज ड्यूटी विद utmost केयर एंड इंटेलिजेंस, तो ये इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं कैन बी ट्रेस्ड इजीली. ओके, सो this is the duty of auditor to find out those transactions, fake transactions during his audit process, and it can be done when he performs his duty with utmost care and intelligence. Okay, then these types of frauds can be traced by him very easily. So in that case, in this reference, a very famous case study in respect is Armitage versus Brewer and Not 1932 was established. वहां पे क्या था कि one employee fraudulently has claimed some damages and auditor has accepted it, but in court auditor was held responsible as his duty as he did not perform his duty with intelligence and have not checked the authenticity or reliability of that voucher, that is supporting evidence that customer has done. Okay, तो यहाँ पे क्या था इस केस स्टडी में कि रिलेटेड टू इट ब्रेयर एंड नॉट, आर्मिटेज वर्सेस ब्रेयर एंड नॉट इस केस स्टडी का नाम था, जो कि 1932 की केस स्टडी है. तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने झूठ बोल के फ्रॉड तरीके से कुछ डैमेजेस क्लेम किए, और ऑडिटर ने वाइल ऑडिटिंग वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो किए उसने, तो वहां पे ऑडिटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट चेकिंग कि वो फेक है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, विदाउट चेकिंग प्रॉपरली द एविडेंसेस जो सपोर्ट में उसने लगाए थे. has been in the then court has find out that auditor ने अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, had not checked with intelligence and reliability of those vouchers. तो in section 143 of Companies Act 2013, it is very clearly mentioned that it is the duty of that auditor to check whether those financial statements are what? Your balance sheet, profit and loss account is giving you a true and fair view of your company's position, and this is only possible when auditor perform his duty very effectively, efficiently, diligently, carefully. Okay, तो सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ड्यूटी है ऑडिटर की, उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से कि वो जो कंपनी ने शो किया है अपना ट्रू एंड फेयर व्यू उसको सपोर्ट में है या नहीं. और ये कब कर सकता है? जब वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे. कैसे? जो इसके ऑडिटिंग के प्रोसेस है, हर प्रोसेस की हर स्टेप को अच्छे से फॉलो अप करे. ओके, सो अबव मेंशन जो अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया रिगार्डिंग केस इसके थ्रू व्हाट वी कैन से दैट
कि जो वाउचिंग है वो लाइफ है ऑडिटिंग की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑडिटिंग का. ओके, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे उन वाउचर्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, और किस तरीके के हमारे वाउचर्स होते हैं टैली में. सो इन टैली ERP 9 देयर आर नंबर ऑफ वाउचर्स that can help the accountant in performing their duties. So these are some below mentioned vouchers. First one, your purchase voucher. What purchase voucher says? Purchase voucher in Tally helps in changing a purchase voucher in the voucher format, form invoice format. Basically what purchase voucher is, it is a type of voucher that can be found both in invoice form and in voucher form. So it is very easy for accountant to modify it in Tally. तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में वाउचर जो है अवेलेबल है, whether it's in the form of invoice और वाउचर. तो यहाँ पे अकाउंटेंट बहुत इजीली इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है. तो जब ऑडिटर इसका ऑडिट करेगा तो दोनों फॉर्म में he has to check. Then next is your sales voucher which is related to sales, and ये बहुत फेमस वाउचर है अकाउंटिंग में क्योंकि जो भी प्रॉफिट है कंपनी का बेसिकली हमारा सेल्स के थ्रू पता चलता है. तो सेम लाइक जैसे परचेज वाउचर है, इसमें भी दो फॉर्मेट है हमारे, एक इनवॉइस फॉर्म में और एक वाउचर फॉर्म में. सो परचेज वाउचर इट कैन ऑल्सो बी मेड इन बोथ फॉर्मेट, दैट इज योर इनवॉइस फॉर्म and voucher form. So in computerized accounting system, main advantage is that it doesn't require any traditional form like paper form or invoice format allow. Okay, so invoice format allows what? The accountant to print a copy of vouchers for the customers. So all the records of transactions are stored in electronic form only. तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज क्या है कि आपको कोई भी ट्रेडिशनली जैसे हम पेपर में नोट डाउन करते थे सेल्स इतना हुआ आज का, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर फॉर्म में नहीं, एक इनवॉइस फॉर्मेट में आप जो रिकॉर्ड कर सकते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसमें अकाउंटेंट प्रिंट कर सकता है कॉपी ऑफ वाउचर अपने कस्टमर्स के लिए भी अगर उन्हें देना चाहे. ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ट्रांजैक्शंस के दैट आर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली. सो सेल्स वाउचर इज दैट. देन नेक्स्ट इज योर receipt voucher. Receipt voucher, what it does, it helps accountant to be updated with information regarding payment of customers, कि जो customers को payment हुई है उसके relation में receipt जो है आपको देखना है, तो then you had to go to the receipt voucher. So whenever client made the payment for voucher, he will get updated with the information regarding receipt details, कि जो भी receipt details हैं कि किसको उन्होंने पेमेंट की है, तो उसकी रिगार्डिंग जब भी क्लाइंट पेमेंट करेगा तो जो भी डिटेल्स हैं उसकी वाउचर की वो रिसिप्ट डिटेल्स उसको मिल जाएंगी. सो ऑल द डिटेल्स रिसीविंग कैन आल्सो बी शेयर्ड विद द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट वाउचर. देन नेक्स्ट इज योर पेमेंट वाउचर. टैली में जो पेमेंट वाउचर है ये हेल्प करता है प्रिंटिंग एंड मेकिंग द चेक्स फॉर द पेमेंट टू क्लाइंट्स. तो जैसे ही वाउचर अप्रूव होता है तो चेक अगेंस्ट पेमेंट्स गेट प्रिंटेड बाय सिंपली प्रेसिंग बैंकिंग फॉलोड बाय चेक प्रिंटिंग. ओके, तो पेमेंट वाउचर इज रिलेटेड टू व्हाट? इन प्रिंटिंग एंड मेकिंग द चेक्स फॉर द पेमेंट. सो जब भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को पेमेंट करेगी तो व्हाट विच वाउचर ही हैज टू गो फॉर? ही हैज टू गो फॉर द पेमेंट वाउचर which helps in printing and making checks for the payment. Then next is your journal voucher. Journal voucher, what it says, again this is a type of voucher which comes under the category of both inventory and accounting voucher. ये दोनों में शो होगा whether it is a category of inventory or accounting. So journal voucher can be used for multiple purposes in different types of business based on or depending upon the uses. ठीक है, तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज कर सकते हैं और बिजनेस अपने यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज करना चाहे. सो जर्नल वाउचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टॉक्स व्हाइल ट्रांसफरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल वाउचर कंपनी कब यूज कर सकती है? जब वो अपने स्टॉक्स को ट्रांसफर कर रही है और उनका इन रिलेशन टू दैट अगर उसको कुछ एडजस्टमेंट करना है तो देन दे कैन गो फॉर द जर्नल वाउचर. Then next is your contra voucher.
Contra voucher is what? It is used for both purposes. Like first, if you want to withdraw money or you want to deposit the money. Okay, so like contra entry, you can say contra voucher is there and which is used for purpose of withdrawing money and depositing money. So various modes you can say like check hai, through ATM hai, demand draft hai, these can be used for this purpose. So contra voucher, how it helps the accountant? It helps the accountant to print slips to keep it as a record. Then is your debit note voucher. What debit note voucher says? This type of voucher are used in Tally for recording purchase returns. कि अगर आपका कोई purchase return हुआ है company का, तो this is one of the most frequently used voucher in Tally, and it helps accountants in getting the debit note. Along with that, they can easily obtain the printing of this debit note by pressing F11 key. Okay. Then next is your credit note voucher. Like debit note voucher, uh, a credit note voucher is also enabled by F11 key, and this is also useful for recording your sales return. कि अगर आपका कुछ sales हो गया था, then there is a return regarding sales, तो sales return is there. तो आप credit note voucher पे option जो होगा आपका credit note voucher होगा, and if you want to check transaction history of a client, then only step is to select that client and then credit note voucher regarding it. Okay, so these are some specific type of vouchers, accounting vouchers that are in Tally, and there are inventory vouchers in computerized accounting system that are useful for recording movement of goods and services. Okay, now अब अगर आपको वाउचर्स की एक्यूरेसी चेक करनी है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेकिंग दैट? सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैड टू डू, you had to go to the gateway of Tally, and then you had to select the option display in which voucher types will appear. In that you had to select the day book, and in that day book, if you want to change the voucher type, then you had to select that, and if you want to change the time period for that, there is a shortcut key. By pressing alt along with F2, you can get the date option that you want to change, and window screen will appear. In that time period is given, so in that time period you can change the time duration in the input bar. So all vouchers are presented in that time duration bar. Okay, so likewise आपका इस तरीके से vouchers show हो जाएंगे जो कि आपके कॉन्ट्रा है या क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, अदरवाइज इट इज अ डिलीवरी नोट और एक्साइज सेल्स परचेज स्टॉक जर्नल, तो मैनुअली सैंपल्ड हैं, और कितने टोटल वाउचर्स हैं, ऑडिट कितने हो गए, लाइकवाइज यू कैन सैंपल वाउचर्स आपके कितने हैं, तो इस तरीके से आपका ये शो हो जाएगा व्हाइल यू आर डूइंग वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स इन टेली. Now, these are some of the shortcut keys regarding vouchers in Tally, कि आप सारा बार बार जो है functions use ना करके, steps use ना करके, you can go directly with these shortcut keys. If, for example, if you want to know about the sales order, then directly you have to press alt along with F5, then you will get directly go into the sales order. Likewise, purchase order, alt plus F4, receipt voucher, alt plus F9, delivery note, alt plus F8, rejection in voucher, shortcut key is your control plus F6, then keyboard shortcut for rejection out is your alt plus F6, then keyboard shortcut for stock journal is your alt plus F7. Then physical stock voucher agar aapko dekhna hai, then by pressing alt plus F10, this is the short key, you can go to the physical stock voucher. Then for directly going to the contra entry, shortcut is F4. Payment entry you want to show, F5. Receipt entry you want to show is F6. Then if you want function key for general entry is F7. If you want to know about sales entry, then you have to press F8 along with alt. Okay, shortcut key for purchase entry is your F9. Then keyboard shortcut here, you had not to use the alt, you had to use control plus F9. Okay, then you will directed for debit note, control plus F8, you will get credit note. Then for reversing journal, shortcut key is F10, and shortcut key for memos voucher is your control plus F10. So verification of vouchers, अगर आप ये screen देख रहे हो,
what it tells about verification of vouchers through sampling method, जिसमें purchase, payment, purchase, receipt, sales है, total vouchers are given, how much are audited and sampled. So this was about types of vouchers. Now, when we say about types of vouchers in auditing with Tally, so on the basis of requirements of the firm, Tally can audit vouchers in accounting, and those vouchers are categorized broadly into three categories. Okay, namely accounting, order and inventory vouchers. So accounting, inventory and order vouchers जो है तीनों categories में जो divide किए हैं, what are those? Accounting vouchers क्या हो गए? Accounting vouchers include your purchase vouchers, sales vouchers, contra voucher, credit and debit voucher and journal voucher. So these type of vouchers are included in your accounting voucher. Then inventory vouchers, what it includes in Tally? It includes your delivery note, a receipt note voucher, rejection in voucher, rejection out voucher, and stock journal voucher. And lastly is your order vouchers. Basically, here you will say about your purchase and sales order. Okay, the purchase and sales order are in order vouchers. Now, these are the steps for audit analysis and verification analysis if you want to see that. So first of all, what you had to do, you had to go to the gateway of Tally, then press on audit and compliance, audit and analysis. Gateway of Tally, you all know this is the gateway of Tally. Okay, तो यहाँ पे आपका accounts info है, inventory info is there, accounting vouchers, inventory vouchers, import of data. Okay, I don't know what has happened. So these are the things. यहाँ पे आप जो है, this is the gateway of Tally. Whatever information you want to know, यहाँ से आप display कर सकते हो. This is the display option. The reports में आप, if you want to know about the report of balance sheet, you had to select this option. About profit and loss account, this option you had to select stock summary, ratio analysis. So these are the options of reports. Okay. Then company info, period, date, you want to change short company or a select company, and through features you can change the features regarding that company, whatever features you want. Then configuration. So this was about this so first of all, what you had to do, you had to go to the Tally, then press on the audit and compliance, select audit analysis, then their screen appear where you had to select the verification of vouchers. Then you will get the number of vouchers, list of vouchers. From that you have to select which voucher type you want to audit and verify, then press enter. Then voucher window will appear. In that you had the column of month register, select that month, which month voucher you are going to audit or verify. Then in auditing, इसके लिए आपका जो शॉर्टकट किया, दैट इज ऑल्ट प्लस F9, मींस ऑल्ट की के साथ F9 प्रेस करोगे, यू विल बी, यू डोंट हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, यू विल डायरेक्टली गो टू दिस थिंग जो आप यहाँ तक पहुंचे हो, मंथली रजिस्टर में सेलेक्ट मंथ, प्रेस एंटर. देन यू हैव टू चेक, क्लिक ऑन द ऑडिट स्टेटस on the drop down menu, and at the end of process all the audit details will be copied to audit working paper. So these are the steps. Now your next topic is your related party transactions. Okay, so we are going to have a 10 minutes break. Then we will continue this related party transactions. Okay, so I'm stop sharing my screen. Till then, if you had any doubt regarding 1 hour session, जो अभी हमने discuss किया है, you can write it down on the chat or can ask me directly. We will discuss it again.
Okay, so we are back with the session. Uh, what we have discussed related party transactions. What are related party transactions? Just a second. Normally, in a business, people make deals with people they know in advance. Generally, in reality, होता भी है कि जिसे आप जानते हो आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील करना चाहते हो because they can have trust on them. Okay, so normally what happens in business, people make deals with those people those he know in advance because of trust issues. So but sometimes people use it for their own benefits. Thus, here the role of auditor comes. What he has to do, the auditor use his expertise and differentiate those transactions which are genuine and third party transactions. Okay, but before going in deep, first of all, it is necessary to know about what is the meaning of related party. Who is the related party? Okay, in accounting standard, if I say accounting standards have defined who is a related party and how auditor can trace those related party transactions. Okay, so who is the related party? Accounting standard defines related party transactions are those transactions that can take place between subsidiary and its parent company, one subsidiary with another having the same parent, trust for the benefit of employees, and principal owner and business. So these are the related parties. पहला क्या है? सब्सिडरी है कोई पेरेंट कंपनी और उसकी ही कोई अलग सब्सिडरी कंपनी है, तो उन दोनों की ट्रांजैक्शंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, तो दिस इज द रिलेटेड पार्टी. दूसरा है कि उसी सब्सिडरी की जो है एक सब्सिडरी है और विद अनदर उसकी एक और सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी की पेरेंट कंपनी के साथ जो है पेरेंट कंपनी के साथ रिलेशन है. देन ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज है कि बेनिफिट एम्प्लॉइज के बेनिफिट पे जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स कर दिए तो वो रिलेटेड पार्टी हो गए अगर एम्प्लॉइज है. देन प्रिंसिपल ओनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन है तो दैट इज ऑल्सो अ रिलेटेड पार्टी कि वो जो बिजनेस है उसका प्रिंसिपल ओनर के साथ इन रिलेशन टू दैट ट्रांजेक्शन हैज अकर्ड. ओके, so this is related party or this is the work of an auditor, how to identify those related parties. Okay, so what is the process, how auditor can trace those transactions of related parties, कैसे वो उनको find out कर सकता है. So this is basically depends upon his expertise, his knowledge on how auditor can trace those transactions which are hidden, and auditor can use documents for finding out those hidden transactions, related party transactions, by using the documents like a detailed list of transactions of the concerned company की उस company की जो detailed list है transactions की वो उसको check out करे. Then documents proving the ownership of board of directors and other members in other firms and their history, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी ओनरशिप, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर देखे और जो अदर मेंबर्स हैं उनकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है उसको चेकआउट करे. देन मिनट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस मीटिंग्स हेल्ड इन द करंट ईयर, कि जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो भी मीटिंग्स हेल्ड होते हैं तो उनका एक ब्रीफ जो है आपको शो करना होता है, दैट इज नोन एज मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें उस मीटिंग का क्या एजेंडा था, क्या टॉपिक था, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दैट मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि ये पॉइंट्स थे, रीजन था कि ये मीटिंग जो है कंडक्ट की गई, दीज वर द आउटपुट एंड इनपुट, और ये रिजल्ट्स जो है लिए गए, ये डिसीजंस मेकिंग हुई है. तो जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उन डॉक्यूमेंट्स को उनकी रिकॉर्डिंग को, जो कि हर करंट ईयर में कुछ ना कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग बिजनेस करता है, तो उनको देखना, उनको वेरीफाई करना. देन जितने भी बैंक रिकॉर्ड्स हैं, particularly those transactions which involved inter कंपनी ट्रांसफर्स, तो उनसे रिलेटेड जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस आउट करना, चेक करना इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. देन ओनली ही कैन आइडेंटिफाई दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर in relation to related party. Okay, so in related party transaction, audit process, first and foremost step क्या है, to identify related party transactions in companies computerized accounting system. Okay, RPT is your related party transactions. Then in next step what he has to do, accountants of firms are interviewed to know about the persons involved in related party transactions. ठीक है. Then second step क्या है कि जो
जो भी अकाउंटेंट्स हैं कंपनी के, उनका इंटरव्यू लेना, सो दैट दे कैन गेट टू नो कि कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में. एंड एट लास्ट फाइनल स्टेप इज व्हाट, एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, कि उन स्टेटमेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को जो कि प्रूव कर रहे हैं, उनको एनालाइज करना, अच्छे से देखना वेदर दे आर related to related party transactions or not. So for that purpose, internal control is very much essential for discouraging these type of frauds in company. Agar auditor has find out that there is a related party transaction, so for that purpose, what is very much important, internal control. So internal control is essential for discouraging these type of frauds in the company, and this is an alarming situation for all the investors and other interested persons to find, disclose and report in a proper manner. Okay, now process of identifying related party transactions in computerized accounting system. In software, how you can find out the whole process. In the whole process, first step is to identify related party transactions. For that purpose, what you had to do, you had to go to the ledger accounts, okay, which are categorized as related party, will only disclose related party transaction. Okay, so what you had to do, these are the steps. First of all, go to the main gateway of Tele, then analysis or and verification option. You had to go main gateway of Tele. My Tele is not working. Okay, gateway of Tele, then there you had to select the option analysis and verification. Then another screen appear where you had to select voucher verification, which includes related party option that you had to select. Okay. Now transactions, or as an alternative, accountant can press Alt plus G to go directly to your related party transactions and then enter. So this is a shortcut key कि आप shortcut key के through या फिर by following this process कि आप गेटवे ऑफ टेली पे जाओ, ये वाला जो है स्क्रीन में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो तो एक और स्क्रीन अपेयर होगी जिसमें आपको वाउचर वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना है. देन देयर अपियर्स द अनदर स्क्रीन जिसमें आपको रिलेटेड पार्टीज जो है सेलेक्ट करना है. या तो आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लो या फिर शॉर्टकट की ऑल्ट प्रेस करके प्लस जी जो है सेलेक्ट कर लो, तो यू विल गो डायरेक्टली टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. एंड देन यू बाद सेलेक्ट ऑल प्लस वी अगर आपको जानना है व्हाट इज द मास्टर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉन्फ़िगरेशन में आपका मैंने बताया था एट द राइट हैंड साइड आपका फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन गिवन होता है, फ्रॉम दैट यू कैन सेलेक्ट इट. देन in the select related party and press enter, and in the space bar in related party configuration select desired ledger screen. configuration options जो है select करोगे related party configuration का, और वहां पे आपको जो है ledger screen जो है जो भी आप ledger account का देखना चाहते हो वो ledger account का screen appear हो जाएगा. then Alt plus V, this is the update की. अगर आप जो है व्यू करना चाहते हो रिलेटेड पार्टी का जो डिटेल्स है उसका अपडेटेड डिटेल्स, तो देन यू हैव टू प्रेस ऑल्ट प्लस V, then you had to select yes in the related party field and mention the type of relation in relation type and then enter. So after enter, what will happen? You will get a report generated which will show all those transactions which are done with those parties who are identified as रिलेटेड पार्टी. तो आपको क्या रिपोर्ट मिलेगी? ऐसी रिपोर्ट आपको शो होगी जिसमें आपके सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हैं, जो भी पार्टी से हुए हैं रिलेटेड पार्टी से, वो सारे शो हो जाएंगे. ओके, सो ऑडिटर देन हैज टू वेरीफाई दोज वाउचर्स टू चेक वेदर को फेवर तो नहीं किया है कंपनी ने, बिकॉज ही वाज अ नोन रिलेटिव और वो उसका जानने वाला पर्सन था. then he has to verify that. Okay, so related party transaction report देखने के लिए what auditor has to go, again I am telling alt plus यहाँ पे alt plus G जो है बताया शॉर्टकट की. अगेन इन आई एम टेलिंग, या तो आप ऑल्ट प्लस जी जो है टाइप करोगे एंड सेलेक्ट करोगे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन एंड एंटर करोगे. अदरवाइज गेटवे ऑफ टेली पे जाओगे, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन सेक्शन में जो है ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे वाउचर वेरिफिकेशन एंड आउट ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी
transaction, or as an alternative you had to select. Okay, related party transaction या फिर as a alternative Alt+G जो option है आपका directly shortcut की के through आप जो है ये report देख लोगे. I think यहाँ तक आपको सब समझ आया है. Any doubt regarding this session अभी तक का जो कराया है? एक मिनट. Okay, so नहीं. So, computerized assisted audit techniques, what are this? What is this and how it works? We are going to discuss this. Auditor can use computer-assisted audit techniques as an audit technique to inquire about the fraud in computerized accounting system. Okay, कि अगर computerized accounting system में if there is happening of any fraud, then through this technique, auditor can find out. Okay, so this is the very popular technique among business sectors, which helps accountants or which help accounts department to provide more better results. Okay, and this basically gives more technical results and in which as it provides analytical results, which is very helpful for the auditors to perform their duty very effectively and efficiently. Okay, so analytical report जो है results it provides, so it is very much helpful for the auditor while auditing. Okay, so this tool makes the data more simpler and easier to understand. And if I talk about today's time, this method is used in almost every firm where computerized accounting system is being used. And this tool helps the accounting system also, as it provides more better and refined results. Okay, so however you can say firms can make alteration and changes in the CAT according to their requirement. So it is very effective tool as it organize data into a simplified form, कि जो डेटा है आपका उसको बहुत ही सिंपली तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है प्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, which makes it easier and saves times as well. So our technology upgrade itself is more better and efficient CAT tools are in market that are more user friendly. So after you had selected your data to be analyzed, data will be imported to this software, this accounting tool, that is CAT. And but the main process while selecting the data, this is the very difficult process. So when you are importing the data into this computerized assisted audit technique tool, it generate analytical results and increase in the efficiency of auditors. But data import karna is a typical task. It's a very complex task. Okay, so the basic if I say basic problem lies in while you are going to select the data or import the data in that. Okay, so when data is imported to CAT tool, it will generate your analytical results and it helps in increasing the efficiency of auditors. क्यों efficiency of auditors की क्यों increase होगी? Because it provide a very simplified and easier results and analytical results through which auditor can audit their reports. Okay, so the level till which auditor use CAT and other methods depend on following factors. ओके कि किस लेवल तक जो है कैट का ऑडिटर यूज कर सकता है और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं इसके यूज पे. फर्स्ट इज योर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग कैट, कि उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है. देन पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग कैट, कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी. देन टाइम अवेलेबिलिटी फॉर टेस्टिंग, कि जो टाइम अवेलेबल है टेस्टिंग का वो कितना है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर फैसिलिटीज, कि आपके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज कितने हैं. ओके, नाउ की फीचर्स इफ आई से अबाउट कैट, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ दिस accounting tool. Basically, why we are saying it is a tool, because it provides your report in a simplified and easier form in analytical format, so that it will help the auditor to do the analysis part. Okay, so it is a tool. And if I say about its features,
It is a software used for auditing, that is based on computer based accounting. And for achieving this objective, what auditor is required to do, he need to understand its IT structure, its application of data and database structure. So however, cat can be used as a general software such as spreadsheet software. So some features which are the main regarding cat is, what are they? First is its file structure. File structure means कि cat can read different types of format of records in files, जैसे कि Excel file है या any type of text format by using import function. जब आप import function पे click करोगे तो means जो data आप import करना चाहते हो उस डेटा पे इंपोर्ट करते टाइम आपका वो डेटा जो है एक एक्सेल फाइल हो सकती है, कोई अदर फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, रिपोर्ट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है। तो यहाँ पे जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे इंपोर्ट इंपोर्ट जो है जब डेटा का करेंगे तो वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है फाइल का वो कुछ भी हो सकता है। तो इट इज अ वेरी इजी व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग दैट डेटा कि आपका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो क्या है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मींस कि जो कैट है वो बहुत इजीली तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता है आपका जो भी फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हो, वेदर इट इज एक्सेल फाइल और योर टेक्स्ट फाइल, तो उसमें सॉर्ट आउट करना उस डेटा को, इंडेक्स करना और लिंकिंग दैट फाइल विद अदर फाइल्स, तो वो इजीली सॉर्ट आउट कर देगा। तो इससे क्या होगा, ऑडिटर को बहुत अच्छे से हेल्प होगी कि इंस्टेंट रेडी फाइल उसको मिल गई फॉर ऑडिटिंग पर्पज। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैन बी डन वेरी इजीली by the cat accounting tool, which helps the auditor to get an instant ready file. Okay, then third is statistical functions. Statistical functions means ki these are the functions which analyze data by taking a sample, then its classification. By taking sample, they had to classify. The next step is your classification and then analyzing it. Okay, so थ्रू स्टैटिस्टिकल टर्म व्हाट इट सेज कि जो कैट है वो क्या करेगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम क्या करते हैं उसका एनालाइज करते हैं बाय टेकिंग सैंपल। हमने जैसे पॉपुलेशन है उसमें से कुछ सैंपल लिया, पॉपुलेशन आपका 100 का है, आप 100 स्टडी नहीं कर सकते हो, 100 जो पैरामीटर्स हैं तो आप उसमें से जो मेन है कॉमन है 50 पैरामीटर्स मैक्सिमम ले लिया और उसके बेस पे आप स्टडी करते हो। लाइकवाइज यहाँ पे भी आप जो है डेटा का जो स्टडी करोगे सैंपल लेके कर सकते हो, देन उसको क्लासिफाई करोगे डिफरेंट ग्रुप्स में और उसका एनालिसिस करोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज योर डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर है इसका बड़ा ही यूनिक फीचर है ऑफ सिलेक्टिंग डेटा इटसेल्फ आफ्टर एंटरिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखोगे, इसमें इनपुट दोगे और उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि इसका एक यूनिक फीचर है, आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट along with these features जो precautions आपको लेने हैं, what precautions should be taken by you while using this CAT software, what are those? Okay, so as we have discussed that CAT provide a lot of unique and useful features for auditing of data, but certain things may happen wrongly. For that purpose you had to take precautions keeping in mind while using this software. For example, if you are what precautions you have to take, first of all what, कि जैसे कि मान लो फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द राइट डेटा, कि आप एक सही डेटा अपना सेलेक्ट करो। देन जो भी रेलेवेंट फाइल्स हैं वही आप सेलेक्ट करो, ऑल रेलेवेंट फाइल्स ओनली टू बी सिलेक्टेड, एंड जो डेटा का फॉर्मेट है that format should be a correct one, so define that correct format of data in advance. Then make sure जो डेटा आपने एनालाइज किया है वो एक कंप्लीट तरीके से आपने एनालाइज किया है, so make sure that data is analyzed in a complete manner. If any testing is required then perform them, कि अगर उस डेटा से रिलेटेड कोई आपको टेस्टिंग करनी है तो you are required to perform that. Then main factors to be considered while using CAT, कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं जब आप ये अकाउंटिंग टूल यूज कर रहे हो।
So main factors you had to consider that the knowledge of computer hardware and software कि आपको उस computer software की जो और along with software hardware की जो knowledge है वो आपको होनी चाहिए. Time availability should be there, cost constraint should not be there. Then experience of auditor means the auditor should be experienced one who has the knowledge regarding computer hardware, software, its application and software programming. Then what are the availability of CAT facilities? Then auditor should be an expert in professional one. उसकी जो expertise है वो क्या है? Then what is the audit risk and what is the audit evidence? So these are some of the examples while you are doing analysis through CAT tool. So these are some of the examples you have to keep in mind while auditing the data. Okay. So audit is what? It is a process of verifying and analyzing what accounting entries with the help of evidences. Okay. So on this basis, what you can say, जो scope and objectives हैं audit के, scope and objectives of audit, auditor can get those evidences by observation, by inspection, by inquiry, by calculation, analyzing and other methods. Okay, तो वो observe करके जो है auditor अपना जो है ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है ऑब्जर्वेशंस, इफ आई से इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो चीजों को ऑब्जर्व करे, उसके बेस पे डिसीजन ले सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है उसके रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है थ्रू इंटरव्यूज वगैरह करके, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस कर सकता है, एनालाइज करेगा, एंड देन अदर मेथड्स आर आल्सो देयर रिलेटेड टू ऑडिटिंग. तो उन सबके थ्रू वो जो है ऑडिटर कैन गेट दोज एविडेंसेस. नाउ नेक्स्ट इज योर guide to a cat. Guide to a cat means how you can get can get a guide to a cat. First is identity. First is identity means identity includes these seven steps. First, contact, data source, way of collection, extraction process, data structure, format of data and data consideration. Contact means कि जो owner है data का और अ पर्सन जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है डेटा का, उसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट. तो जो कैट सॉफ्टवेयर है उसमें जो ये सारे टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है? ये सारे टर्म्स हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड. फर्स्ट वन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया वो ऑनर है डेटा का या फिर वो पर्सन जो कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा इज नोन एज कॉन्टैक्ट. ओके, देन उस पर्सन को हम बोलेंगे contact. The next is your data source. Data source is what? It is the place where all the details regarding data is given. जहां पे आपका डेटा का डेटा से रिलेटेड जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उस डेटा की, जहां पे जिस जगह पे वो गिवन है, दैट इज योर डेटा सोर्स. सो जो डेटा सोर्स है, ऑडिटर को पता होना चाहिए कि ये जो डेटा सोर्स है उसकी जो डेस्टिनेशन फाइल है वो कहाँ पर है, जिससे कि वो जो बैकअप है उस डेटा का वो कहाँ से उसको मिलेगा. तो वो एक्यूरेट और रिलायबल है भी या नहीं, ऑडिटर को ये मेक श्योर करना है. ओके, सो ही हैज टू make sure whether that data is realistic or not, whether it is accurate or reliable or not. Okay, so data source kya hai? Where all details regarding data is given. So auditor must be aware about the destination of that data, from where the data is coming, like from a backup or a production system. And however, auditor also had to be need to be assured that data is accurate and reliable. Then way of collection. Way of collection, what it says, कि जो script है या history version है, from history you are taking the data or it's a scripted one. Then next is extraction process. जो आप extract करोगे data को, how the data is extracted from the data source. It includes validation and cleaning of data. Extraction process basically क्या होता है कि आप एक इनिशियल डेटा इनपुट करते हो, देन अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसमें क्या करते हो, चेंजेस कर देते हो. तो चेंजेस जहां पे आपने कर दी, जो आउटलायर्स है उनको हटा दिया, क्लीन कर दिया वो डेटा, जो आपके फॉल्स चीजें थी, तो वहां पे क्या है, वो क्लीनिंग कर दिया आपने, हटा दी चीजें डेटा की, तो रिलायबल वन. सो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जो आप डेटा हटाते हो, वो प्रोसेस क्या है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपके जो रियल ट्रांजेक्शन थे वो आपने क्लीन कर दिए. सो इट इज द
ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू वैलिडेट दैट कि जो डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जहां भी डेटा सोर्स से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो उस डेटा का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो डेटा जो है वैलिड है भी या नहीं, और जो उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वहां पे क्लीनिंग ऑफ डेटा का क्या प्रोसेस है, वहां पे वो चीज वैलिडेट करना. ओके. Then your data structure. Data structure, what it tells, how the data should be look like, including description of each field. Okay. तो जो डेटा है वो किस तरीके से आपका दिखना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, लाइक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किस तरीके से हो आपका जो डेटा है. देन फॉर्मेट ऑफ डेटा. फॉर्मेट ऑफ डेटा मीन्स कि जो आपके आउटपुट फाइल निकलेगी. ओके. आउटपुट फाइल का जो स्ट्रक्चर है, आउटपुट फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए. इट इज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. ओके. एमएस वर्ड. सो टेक्स्ट फॉर्म में, एक्सएलएस फॉर्म में, सीएसवाई फॉर्म में, किस फॉर्म में आपकी जो फॉर्मेट है डेटा का, जो आउटपुट निकलेगा वो कैसा होना चाहिए. Okay. Then seventh is your data consideration. Data consideration, what it is, what you have to consider extra at the time of extracting data, like confidentiality, legislation, etc. तो data कौन कौन सा आपको consider करना है. Okay. जब आप data extract करोगे for the auditing purpose, तो वो data कौन कौन सा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कौन कौन सा आपको लेना है. एक्स्ट्रा डेटा भी आपका निकल के आता है, तो विच इज रेलिवेंट दैट यू हैव टू टेक. ओके. सो कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा हो सकता है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड डेटा हो सकता है, तो यू हैव टू कंसिडर सम एक्स्ट्रा डेटा आल्सो. ओके. नाउ obtain what it means, large volume of data can easily be analyzed in CAT. That is the biggest advantage of this software which provides to an auditor. So with the help of this software, accuracy can be increased, but obtain those data only which is relevant, not every data that you can extract. So यहाँ पे obtain का मतलब क्या है कि आप large data जो है extract कर सकते हो through this accounting software. ये इसका सबसे बड़ा advantage है auditor के लिए, क्योंकि वो सारा data जो है extract कर सकता है और उसके basis पे वो अपनी audit report बनाएगा. ठीक है, opinion देगा. But along with that obtaining that data, it is necessary कि आप वही data extract करो. Extraction तो आप बहुत सारे data का कर सकते हो, वही करो जो कि आपका relevant है. So obtain those data only that is relevant, not every data that you can extract. Okay. Then next is your text. Just a second. Okay. So next is your test. What it says, that helps in becoming more efficient and fast through testing. कि जो एफिशिएंसी है कैट की, अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो इट हेल्प्स इन बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड फास्ट. टेस्टिंग हेल्प्स अस इन नॉट इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ ऑडिट but also provides more value to control. These are basically two principles which actually increase the value. ठीक है. तो टेस्टिंग से क्या होता है, it helps in improving the level of audit and it provides more value to the control activities. Okay. So दो चीजें जो हैं थ्रू टेस्टिंग, द कैट सॉफ्टवेयर, क्या दो चीजें आप कर सकते हो. पहला है कि ये हेल्प करता है जो ऑडिट का लेवल है उसको इम्प्रूव करने में, एंड सेकेंड वैल्यू टू कंट्रोल, कि ये ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है कंट्रोल प्रोसेस में. ओके. सो फर्स्ट टेस्टिंग इंक्लूड्स दैट टेस्टिंग ऑफ ऑल रेदर देन वन सैंपल, कि आप सारा टेस्ट करो, किसी एक सैंपल को टेस्ट नहीं करो. विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंक्शन सच एज वी लुकअप, ऑडिटर कैन test all values so that more coverage is there and no value can be missed. Give extra time for test repetition in audits as it saves future time, and also no big modification is required. Okay. But if there is a major change, then you have to rewrite the data in CAT and can solve the problem next time. And if no new data changes, then continue with the old version. मतलब क्या हुआ कि जो पहला टेस्ट है वो इंक्लूड करता है सारे टेस्टिंग का
ना कि किसी एक सैंपल का वो टेस्ट करे, और उसकी हेल्प से सर्टेन फंक्शंस जैसे कि वी लुकअप है, ऑडिटर टेस्ट कर सकता है सारे वैल्यूज को, जिससे कि क्या होगा, ज्यादा कवरेज होगा और कोई भी वैल्यू मिस आउट नहीं होगी। और जब वो ज्यादा कवरेज होगा, कोई भी वैल्यू मिस आउट नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा टाइम, ऑडिटर जो है ज्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है फॉर टेस्ट रेपिटेशन इन ऑडिट्स, जिससे कि जो उसका फ्यूचर टाइम है वो बचे, सेव हो, और कोई बिग मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो, जिससे कि जो मेजर चेंजेस हैं दोबारा से रीराइट करो डेटा को इन कैट, और सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट टाइम में। अगर कोई नए चेंजेस हैं तो फिर वो न्यू जो ओल्ड वर्जन है उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इफ इट इज फाइनलाइज दैट दीज टेस्ट आर यूजफुल, देन सेव ऑल द फॉर्मूलाज, इंडेक्स, सॉर्टिंग, क्वेरीज, और जिससे कि जो नेक्स्ट टाइम जब वो ऑडिट करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें सेव होंगी, तो उन्हें दोबारा से वो चीजें रिपीट नहीं करनी है ऑडिटिंग के लिए, और उनका टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। ओके, then next is your articulate. Articulate, what it means? It means those transactions which are included in audit report are depending upon the ability of auditor to understand the importance of टेस्टिंग। ओके, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए हैं आपने ऑडिट रिपोर्ट में, उनकी जो रिपोर्ट की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है एबिलिटी ऑफ ऑडिटर के, कि वो किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है उस टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को, जिसके थ्रू उन्होंने वो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। लेकिन जो कैट का बिगेस्ट एडवांटेज है टेस्टिंग का, that is testing total population rather than a sample. This is the biggest advantage कि जो कैट सॉफ्टवेयर है वो कैट अकाउंटिंग टूल है, वो सिर्फ सैंपल को टेस्ट नहीं करता, इट टेस्ट टोटल पॉपुलेशन। Okay, so more accuracy and importance is given, and also it makes easier to communicate about auditors finding or result. तो इसमें भी वो हेल्प करता है, तो इसका मतलब है कि इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आफ्टर इंस्पेक्टिंग, एनालाइजिंग द डेटा, और बिफोर मेकिंग द फाइनल रिपोर्ट, it is very much important for auditor to use his own knowledge and judgment, not depend on the accounting tool only. Why? Okay, so for any software, human knowledge is also required, because सॉफ्टवेयर के आप अगर सही इनपुट देते हो, सही आउटपुट सॉफ्टवेयर आपको देगा, और उसके बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बट फॉर प्रोवाइडिंग दैट इनपुट करेक्टली, यू डू नीड टू हैव अ ह्यूमन being. Okay, so it is very important, after inspecting and analyzing the data or before making the final report, that auditor should use his own knowledge and judgment, as a method of cat is very useful in finding weak areas and concern for improvement. Now there are some examples of using cat, test using cat. What are they? First is your cat will be helpful in performing various tests, especially substantive tests. And these tests depends upon the risk involved in audit, and on the basis of this, further tests are being performed. So these are some of the tests which can be used through cat accounting tool or cat accounting software. Okay, so first is your control check or analysis. In this test, what you do, check whether the control system is working according to the set standards or not. ठीक है, जो आपके कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, that are working according to the standards or not. Then like if there is a fixed limit for any client, then it must be follow. और अगर आपने कोई fixed limit किसी client के लिए रखी है, तो वो fixed limit के according follow up हो रहा है या नहीं, that you can see. Then next is your exceptional transactions. Exceptional transactions means identify some exceptional cases जहाँ पे कुछ predefined set criteria you had to follow. Okay, so that predefined set criteria. So identify that if there are some exceptional cases where some set criteria you had to follow. Means that accounting software cat has to follow. Then fraud detection. Fraud detection, what it says, it helps in detecting those areas where frauds can be happened. So for example, some transactions company ने जो है कुछ transactions enter किए जो approved नहीं थे. Okay, so some transactions can be entered which are not approved. So by this activity, you can help to detect those areas in which these frauds can happen. The next is your identify errors. Identify errors means
कि it helps in identifying those transactions which are having error or can be easily identified by this. So for example, अगर आपने wrongly amount enter कर दिया किसी भी entry में, या फिर along with wrong amount आपने जो है क्लाइंट का नाम गलत कर दिया है, उसको डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया है, तो इस तरीके के अगर कोई एरर्स हैं थ्रू कैट यू कैन फाइंड आउट इजीली. Then next is so identifying error is what? Transactions which are having error can easily be identified with CAT. For example, wrong entry of account number in other clients. Then next is your check calculation. चेक कैलकुलेशन मीन्स कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस करेक्ट हैं भी या नहीं. ओके, सो इन कैट ऑल कैलकुलेशंस डन अगेन टू कंफर्म द रिजल्ट हैज टू बी डन, कि जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं दैट ट्रांजेक्शन्स आर जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं दोस कैलकुलेशंस आर करेक्टेड और नॉट, correct one or not. So in CAT all calculations done against are to confirm the result. Now next is checking of records. Checking of records, here what you had to do, cross check क्रॉस चेक करना जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उनके सपोर्ट में जो एविडेंसेस हैं फॉर चेकिंग. फॉर एग्जांपल चेकिंग ऑल योर इनवॉइसेस. ओके, तो आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं आप उनको दोबारा से चेक करोगे. यू विल क्रॉस चेक ऑल रिकॉर्ड्स, क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ चेकिंग द एविडेंसेस, कि आपके जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं उन ट्रांजेक्शंस के एविडेंसेस जो सपोर्ट में लगे हैं, यू हैव टू क्रॉस चेक अगेन इट फॉर चेकिंग दोज रिकॉर्ड्स. ओके, देन नेक्स्ट इज योर consistency of data. Consistency of data, what it helps, CAT helps in confirming the consistency of data that it is matching with the regular format. Means जो एक regular format company का है, whether the data is accordingly being made or not, तो वो जो consistency है it will be checked. Okay, so CAT helps in checking that consistency. Then next is your data must be complete. Means जो आपका डेटा है वो कंप्लीट होना चाहिए, जितने भी आपके एंट्रीज हैं. मींस वॉट एवर द ट्रांजेक्शन एंट्रीज यू हैड डन, चेक ऑल दोज एंट्रीज whether they have complete data related to it or not. Oh, so these are some of the examples or list of some of the tests that can be performed using your CAT software. Okay, just a second. Okay, so CAT is your auditing technique through which you can do some test along with using this CAT auditing technique. Okay, so by this tool, that is a CAT auditing process, this is your tool. So by this you can check this. Now next is your procedures for CAT analytics. CAT analytics के लिए क्या procedure है? Okay. So for doing auditing, knowledge of various auditing standards are necessary. And among those standards, some of the highlighted need for having complete knowledge of skills, highlight the need for having complete knowledge of skills to audit for computerized accounting system. तो जब भी हम audit की बात करते हैं, तो for doing audit, very important thing is कि you should have the knowledge of various accounting standards related to it, which is very much important, very much necessary. And among those standards, some of the standards highlights the need to have complete knowledge of skills to audit related to your computerized accounting standards. So many auditing standards required compilation of auditing standards which are based on accounting system. For example, we can take the auditing standard SA 520. Okay, so SA 520, what it says, it includes comparison of company's financial statement with other comparative statements for the last periods. Okay, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि we can take the auditing standard SA 520 और वहां का SA 520 बताता है it includes comparison of company's financial statement, कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप कंपेयर करते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट लास्ट पीरियड्स के. जो लास्ट
पीरियड्स की कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपनी ने बनाई है उसके साथ. ओके, सो इट इंक्लूड्स बजट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर्स, forecasted results, information of similar other firms, called इंट्रा फर्म जो है कंपैरिजन अगर आपको करना है तो उसको आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस, एंड दिस हेल्प्स इन नोइंग द फर्म्स पोजीशन इन द industry. So lot of analytical work can be done in computerized system by using CAD, which proves accounting processes more efficient and comparable. Okay, then next is documents required for CAD. Okay, while you are doing CAD, computerized while doing computerized assisted accounting technique, assisted, sorry, audit technique. So what are the documents that are needed, or the documents required for doing computerized accounting audit technique system? Okay, so work papers are required. So all the steps of CAD should be properly documented to store and provide proper evidences wherever they are needed. Means जो ऑडिट वर्क पेपर्स हैं वो एक तरीके से रिकॉर्ड हैं. दीज आर द फुल रिकॉर्ड ऑफ कैट प्रोसेस फॉलोड बाय फर्म. सो ऑल द डिटेल्स शुड बी, जो भी आपके कैट थ्रू कैट जो आपने बनाए हैं रिपोर्ट्स, दैट शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी stored properly. Why? Because they are providing a proper evidence whenever it is being needed by any party. Okay, whether it is a government, whether it is a stakeholders, right? So it is very much important to provide a proper evidence wherever needed and store it in a proper way. Okay, so audit work paper record of CAT process that is followed by the firms. So all the details regarding your CAT documentation are divided into these sections. First one is your planning. Planning, what it says, CAT documents firstly describe your audit objectives, कि आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, देन फ्यूचर प्लान्स क्या है, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है कैट को टू अडॉप्ट एंड कंट्रोलिंग प्रोसीजर. तो प्लानिंग करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है कैट के प्लानिंग से रिलेटेड वो क्या होंगे, कि जो कैट डॉक्यूमेंट्स है पहले डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, फिर फ्यूचर प्लान्स, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, टेक्निक्स फॉलो करने हैं कैट को टू अडॉप्ट कंट्रोलिंग प्रोसीजर. ओके, देन एग्जीक्यूशन. आफ्टर प्लानिंग, what is the next step? It includes execution. It includes whole process to be followed. So document supporting CAT procedure and its testing process. कि जो whole process जो इन्होंने plan की है उसको क्या करना है, अब उस whole process को follow up करना है, follow करना है, शुरू करना है. Okay, so documents जो support करते हैं CAT procedure को और इसकी testing process को, वो क्या क्या है? It includes details of testing that is performed in CAT, और जितने भी इनपुट डिटेल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लाइक डेटा टेस्टिंग फाइल्स हैं जो, और जितने भी सोर्स ऑफ कोड और लिस्टिंग्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज योर ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस मींस ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे एविडेंस से रिलेटेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैविंग द डिटेल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, की जो आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके बने हैं उनसे रिलेटेड जो आपका आउटपुट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, इसके अलावा जो भी आपका आउटपुट है उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स. ओके, देन डिटेल्स ऑफ ऑडिट एनालिसिस, जो ऑडिट एनालिसिस ऑडिटर ने किया है उसके डिटेल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है. देन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट फंक्शन, कि जो ऑडिट फंक्शन ऑडिटर ने किया है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट, एंड सजेशंस ऑफ द ऑडिटर, कि जो ऑडिटर का ओपिनियन है व्हाइल डूइंग द ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट टेक्निक्स, देन व्हाट आर द सजेशंस और ओपिनियंस ऑफ दैट ऑडिटर. सो दीज आर द ऑडिट एविडेंस, कि जब आप ऑडिटिंग कराती है कंपनी कोई भी तो उसके ऑडिट एविडेंस क्या है. पहला, कि उसका डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंक्लूड होंगे, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिव एविडेंस के फॉर्म में, आउटपुट जो आपका है फाइनल अकाउंट्स उसके फॉर्म, उसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे, ऑडिट एनालिसिस की डिटेल रिपोर्ट, उसके रिजल्ट्स, उसके कंक्लूजन ऑडिट फंक्शन के, और जो सजेशंस हैं ऑडिटर के, वो सारे आपके ऑडिट एविडेंस होंगे. देन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या है, कि इन फर्म्स where CAT is used in audit technique, it is better to include each and every details of audit technique in audit report, explaining the methods,
plan, aim, procedure, and methodology of CAT. However, details should not be over explaining, but at least provides the good detail. कि over explain या overstated information ना हो, उसमें जो important details हैं that are being discussed. So जो firms use करते हैं CAT टेक्निक को अपने audit टेक्निक में, तो वहां पे उनकी जो डिटेल्स हैं, हर डिटेल को, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ऑडिट टेक्निक जो ऑडिट रिपोर्ट में है वो होनी चाहिए कि क्या कैट की क्या मेथडोलॉजी रही है, कैसे उन्होंने जो मेथड्स प्लान किए हैं, एम क्या रहा, प्रोसीजर क्या रहा, व्हाट वर द रिजल्ट्स. ठीक है. नाउ ऑडिट टेस्ट इन कैट्स. Audit test in CAT, what it says, if accounting data which should be audited are जो अकाउंटिंग डेटा है जो ऑडिट हुआ है शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ई फॉर्म. ई फॉर्म मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट इज कंप्यूटराइज्ड फॉर्म दैट कैट मस्ट बी यूज फॉर. देन कैट जो कैट है उसको बाद में यूज कर सके. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई दैट डेटा, identify data to be audited, inquire about it and obtain confirmation for it and request letter of confirmation to CAT. तो जो भी आपका डेटा जो आपको ऑडिट कराना है वो आप आइडेंटिफाई करोगे, इंक्वायरी करोगे उसके बारे में और उसके बारे में कंफर्मेशन लोगे कि यस दिस डेटा इज टू बी ऑडिटेड. और उसके ऑडिटेड के लिए ऑडिटिंग के लिए आप एक रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो है एसएस करोगे कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू. देन नेक्स्ट इज योर रीपरफॉर्मेंस. ऑल डेटा जो भी आपका प्रोसेस हुआ है थ्रू कैट उसको रीपरफॉर्म कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस रिपोर्ट के साथ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डेटा ट्रांसफर ऑफ डेटा टू लेजर अकाउंट कैन अगेन बी परफॉर्म्ड एंड क्रॉस चेक विद प्रीवियस लेजर्स. ओके, तो वहां पे आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो. देन recalculation in the CAT, all calculations which जो परफॉर्म्ड अर्लियर इलेक्ट्रॉनिकली उनको आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो बाय रिकैलकुलेटिंग इट. ओके, जैसे कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है या टैक्स कैलकुलेशन है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, तो उनको दोबारा से आप इंडिपेंडेंटली दोबारा कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज करेक्टनेस. करेक्टनेस का मतलब है कि जो कैट सॉफ्टवेयर है इसमें जो यूजर्स हैं वो चेक कर सकते हैं whether the data is corrected or not. Okay, for एग्जाम्पल अगर आपका जो टोटल टैक्स पेमेंट है उसको आप कंपेयर कर सकते हो टोटल जो आपने पेमेंट्स की हैं. सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड कैन बी कैलकुलेटेड एंड विल compared with the actual amount. Okay, so CAT software में you can reperform, recalculate and check the correctness of the transactions again कि जो आपका डेटा है वो करेक्ट है भी या नहीं. देन एनालाइजिंग प्रोसेस. एनालाइजिंग प्रोसेस मींस कि जो वेरियस एनालिटिकल प्रोसेस आपने परफॉर्म किए हैं उनका आप यूज कर सकते हो कंपेयर करने के लिए, यूज फॉर कंपेयरिंग and connecting various parts of financial statements on the basis of data available in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. की जो अब आपने एनालाइज करके जो भी ऑडिटर ने जो डेटा निकाला है उसको आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स का डेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा है उसको आप निकाल के वेरियस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा उसके साथ वो कनेक्ट हो भी रहे हैं आपके जो बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ उसके या योर Okay. Now audit sampling before going to final version of sample of audit has to be designed and tested by auditor. So if result of sampling audit is reliable, relevant and free from errors, then auditors should follow the sampling techniques and that procedure will give statistically correct results. Okay. And it can be further used for substantive testing. So in sampling method, where whether it is a statistical or non-statistical, auditor decide and select a sample which perform on a part of population के जो वो population के पूरा population लेंगे और उसमें वो उस पूरे population में से एक sample select करेंगे और ये auditor का काम है select करना और फिर एक result जो है उस sample के basis पे get reliable and important audit evidence. बेसिकली क्या है, जो ऑडिट सैम्पलिंग है उसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन है ऑडिट टेक्निक्स का पॉपुलेशन के साथ
to population, which is not full one to help auditor to predict the result and also problems that come up in way of auditing, and also the reliability of audit evidences. So statistical sampling is basically a method of sampling in which conclusion is based on mathematically drawn principle. So non-statistical technique is a technique in which result is non-dependent upon sample, as it might be possible that sample chosen is not a representative of population. तो यहाँ पे audit sampling में क्या बोल रहे हैं कि जो audit sampling है, statistics में क्या होता है, हम population में से sample लेते हैं और वो sample हम ये assume करके चलते हैं कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बट इन ऑडिटिंग इट कांट बी पॉसिबल कि हम सैम्पलिंग के थ्रू जाएं। तो यहाँ पे जब अगर ऑडिटर सैम्पलिंग कर रहा है तो सैंपल डिजाइन वो किस तरीके से करेगा, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डिजाइन ऑफ सैंपल। तो ऑडिटर को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के, उसका नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, selecting and sampling method as it is the most crucial step to choose right sample from the population। तो ये सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। और अगर ऑडिटर फील करता है कि इसके लिए उसे किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू वो ये डिसीजन लेके उसका सैम्पलिंग कैसा होना चाहिए, तो देन ही कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग द सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, कि उसका जो पॉपुलेशन है उसमें से वो कैसे सैंपल निकाले कि वो जो सैंपल है वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, कि अगर उसमें इतने एरर हैं तो वो सैंपल में तो उतने ही एरर आपके पॉपुलेशन में है, तो वो चीज वो डिसाइड ऑन कर सके विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ सैंपल में, इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज देर आर 4 कॉमन मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल। आपके ये 4 मेथड्स हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। रैंडम मेथड में हर आइटम को, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन दैट सैंपल। और जो सिस्टमैटिक सैंपल है इसमें एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हो आप हर आइटम के साथ। सो दिस मेथड इज नॉट फॉलोइंग अ फेयर चांस ऑफ एवरीवन, बट अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड इज इजी एंड ऑल्सो इजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। और नॉन स्टैटिस्टिकल की बात करें तो हमारा कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड हैजार्ड सैम्पलिंग इज देयर। कोटा सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इज फिक्स फॉर कोटा इज फिक्स फॉर ईच क्लास एंड फिक्स कोटा इज ड्रॉन फ्रॉम ईच क्लास। वाइल जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या है कि इस मेथड में सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन सोल ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, कि उसकी जजमेंट के बेस पे सारा सैंपल बेस्ड होता है। ही कैन बी बियास एज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, की ऑडिटर अपनी मर्जी से जो है सैंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ फिक्स वैल्यू सेम डिनोमिनेशन लाइक 12, 22, 32 कैन बी सेलेक्टेड। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये ऑडिटर्स की बायसनेस के बेस पे, कि जिससे कि हर उसको इक्वल चांस नहीं मिल पाए event को। So auditor should choose sample in a way so that it is correct representative of the population and it can predict out results correctly and make sure that population is homogeneous, not heterogeneous। homogeneous same nature की population होनी चाहिए, different nature की नहीं, and complete as well, और वो पूरी complete होनी चाहिए। Then next is your hazard sampling। ये एक पॉपुलर मेथड नहीं है सैम्पलिंग की, इन विच ऑडिटर सेलेक्ट सैंपल विदाउट फॉलोइंग अ प्रॉपर टेक्निक। कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है इसमें सैंपल सेलेक्ट करने की, और इट अवॉइड एनी बिजनेस। सो हाउएवर ऑन अ कंक्लूडेड साइड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, बट अगेन you can say that it depends upon nature of auditing, its aim, time and cost factors, by which an auditor has to decide which sampling method he has to choose in her auditing process. So this is about your auditing chapter, and these are your references books from which if you want in-depth knowledge about these all 5 units, then you can go through these references and books. Okay, so I'm stop sharing my screen. Okay, so any doubt regarding today's session you may ask right now. Students, if you do have any doubt, Ashu, Suraj, oh sorry, Suraj, no, Shivendra, if you do have any doubt, you can ask. No, so
Best of luck for your upcoming exam. So this was a revision class regarding your computerized accounting system subject, in which I had covered all the 5 units, and I had provided the practical sessions through Tally software also, along with the theory session, and had discussed about the doubts also. Now, best of luck for your exams. Okay, thank you, class.